Hello, Assalamualaikum everyone. So welcome to Coffee with CEO, a program by CEO Club Pakistan that is for you guys to take inspiration from the leaders and the movers and shakers of corporate industry of Pakistan. And I'm very happy to have a very young and dynamic CEO, Captain Dr. Kamran Fazal. Woo! So much on your title, Kamran, who is basically the CEO for a real estate industry and is also a CEO for an advertising agency. Yes. कैसे हैं आप, Kamran? I'm very well, Ji. Tell us about your project, both of them. Okay, so Takmeel Square is one of the largest commercial complex that's happening in South Punjab. South Punjab mein, if you look at the belt that starts from Sahiwal to Rahim Yar Khan, I don't think there's any project which is as big as this. It is 14 acres of commercial land. 14 acres? 14 acres of commercial land with 120 buildings in the project. 120 buildings? 120 buildings in the project with 4 acres of land dedicated to a park which is inspired by Miracle Garden from Dubai. Oh, really? So? Yeah. Oh, wow. So I'm imagining the Miracle Garden. I actually especially went to Miracle Garden, took a consultant from there. We took our architects from here. हमने एक combined team बनाई जिन्होंने collectively design किया. Share the design and this project is where? It's in Punjab? DHA Bahawalpur. Bahawalpur, Yes. okay. So the project is DHA Bahawalpur. Basically, जब हम project develop कर रहे थे, तो we were actually identifying कि किस city में किया जाए. Our major focus was South Punjab because my father was from South Punjab. So basically, that's my reason to go there. Multan DHA was at that point in time saturated with 14 projects. वहाँ पे already 13-14 projects आ चुके थे. ठीक है. We were the first project in Bahawalpur. Bahawalpur DHA is slightly smaller compared to the rest of the DHAs. Done. But the need of the commercial project was massive because you see the influx of customers comes from Rahim Yar Khan on one side, Khanewal on the other side, and Lodra on the other side. So it actually encompasses approximately 15 to 20 tehsils. Oh. Yes, 5 to 6 districts. You can say that's the hub. Home. That's the hub of activity for them. So that is why we planned something as big as this project. And so far the response has been amazing. Achha, so really so? I can't tell you how blessed we've been. It's all because of Allah's help, Allah Ta'ala's blessings. हमने जितना conceive किया था project को, we have revised our price twice. Oh, it is still selling. Okay. For example, we launched our product at 8 crore rupees a unit, and it is right now the full building is at 980, and if you buy it on floor wise buying, it is at 11 crores. So there is massive upside on the value of the buildings and the units. So but abhi bhi bik raha. So tell at what stage the project is? Project की जी 34 buildings की first ceiling डल चुकी है. Okay. ठीक है. We are in the grey structure form. Grey हमारा hopefully इंशाल्लाह 34 buildings का December तक complete होना है. So मतलब you will be delivering your first batch on this December. No, the grey structure. The finishing and the completion would be in May. May 20. So by June, by half next year, you will be delivering your first batch. And you will be able to shop there. Oh, really? So yes, yeah. Because we're not only selling, we're actually locking our leases with the garden on the corner, garden on the side. Yes. So if I show you the design, basically what has happened is it's actually a triangular plot. I saw that. With the triangular plot, the outer boundary is those 34 buildings with the garden. Okay. So what we're doing is, in the first phase, we're finishing all this phase so that when you're coming from the outside, you don't know what's happening at the back. What's happening in the inside, but the complex seems functional for you. Huh? And it's actually interesting that we've actually handed over that first phase 1.5 years before time. सोच के बात करें सही वाकई ये वाली बात है that you delivered your project before time. Why? Because I'll tell you what has happened. It's not exactly before time. हमने इसको स्ट्रक्चर ऐसे कर दिया है कि जो पूरा प्रोजेक्ट 3 इयर्स में डेवलप होना था उसको हमने फेजेस में डिवाइड कर दिया. आई वांटेड, देखें रियल एस्टेट में नेचुरल अप्रिसिएशन कब आती है? नेचुरल अप्रिसिएशन आती है डिलीवरी पे, जब आपको कुछ नजर आता है, कुछ फंक्शनल होती हैं चीजें तो प्राइस अप्रिशिएट, वरना अदरवाइज द फाइल्स आर नॉट ट्रेड हो रही है और आप खरीद रही हैं मैं खरीद रहा हूँ, दैट्स नॉट फंक्शनल. हमने क्या किया, जब हमने मार्केट रीड की तो हमने अंडरस्टैंड ये किया, हमारे पास एक बहुत जबरदस्त मॉडल था, मैं उससे बड़ा पर्सनली इंस्पायर्ड था. दैट वाज राया का फेयरवेज कमर्शियल. I really like the project and we got the inspiration from this project also. Okay. मेरा architect जो है, his name is Nasir Mahmood. He is the owner of Designer East. Nasir Mahmood, when him and
myself, we were sitting and designing the whole project. We conceived the project in a way that this project, which was at that point in time very successful, we picked up some ideas from here. Then the other project that we got inspired was from Imar का एक project है. It's shop cum store का एक project है in Gurgaon. In Gurgaon, India. Okay. So that was our other inspiration. इन दो projects से हमने inspire होकर अपना पहला अपना ये और फिर जब हमने इसको डिजाइन किया तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि इन्वेस्टर के कमर्शियल बेनिफिट कैसे होगा लाहौर में बैठा हुआ और वो भी बहावलपुर में इन्वेस्ट करें वो कैसे सिक्योर फील करेगा राइट सो हमने ये किया कि इसको हमने 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया ठीक है फर्स्ट फेज में हमने इसका फ्रंटल फसाड डिलीवर दे दिया सेकंड फेज में उसकी बैक की बिल्डिंग देनी है और उसके बाद हमने उसके लास्ट बिल्डिंग्स देनी है जब हमारा फ्रंटल फसाड हैंडओवर होता है और उसमें ब्रांड आके बैठता है तो एक प्राइस अप्रिसिएशन आपको उस टाइम पे मिल जाती है मैं आपको इसकी एग्जांपल मतलब जब आपका फुटफॉल बढ़ता है तो लोगों को पता चलता है एक मार्केट में एक आपका नाम जाता है इवन मोर इम्पोर्टेंट जब किसी जगह का रेंटल एस्टैब्लिश होता है ना तो देयर इज अ ग्लोबल फॉर्मूला कि रेंटल के अगेंस्ट आपकी डेवलपमेंट की कॉस्ट असर्टेन होती है 0.5 का एक रेशियो है when you actually pay the rent on that 0.5% ratio your actual development value develops on that इसी basis पे आपके banks आपको lending करते हैं so it's very technical so we actually established in a way कि अब हम leasing भी साथ कर रहे हैं उसी facade में हम साथ साथ brands लाते जा रहे हैं और हम साथ साथ construction करते जा रहे हैं मेरा idea ये है कि by the end of June to 2023 when we hand over these buildings there will be approximately कुछ 70 to 80% की हमारे पास natural appreciation होगी of the investment of the customer. हमारे लिए आसान हो जाएगा अपना लास्ट प्रोडक्ट सेल करना तो हमने इस तरह पूरा प्रोजेक्ट डिजाइन किया so Kamran although you are very new to this industry but I can see lot of R&D you have done already तो क्या ये आपकी रगों में बहता था ये वाला इंडस्ट्री how come you came into this you are a doctor then you were a captain and now you are into real estate so how this transformation because I worked with almost all the acclaimed real estate brands I started off with a brand called Fazaya Housing Scheme in 2013. I know Fazaya. Yeah, so I worked with them in 2013. As in? We were their marketing partner. Okay, because with your advertising agency, you were working with the real estate people. Learning आपको कैसे मिल रही होती है कि आप उनके strategic partner होते हैं. ठीक है. उनके सारे challenges आप understand कर रहे होते हैं कि उनके पास इस time current market challenges हैं क्या-क्या. ठीक है. That includes product challenge, that includes land challenge, that includes their जिस time पे ballot कब आएगा. अच्छा मेरी पूरी लर्निंग मेरी पूरी 10 years का एक्सपीरियंस विद माय पार्टनर्स हैज बीन जिसके साथ भी मैंने काम किया आपने उससे सीखा मैंने उस इंडस्ट्री में डीप डाइव किया एंड डीप डाइव करके आई हैव आइडेंटिफाइड द बेस्ट प्लेयर्स एंड द वर्स्ट प्लेयर्स बेस्ट प्रैक्टिसेस वर्सेस वर्स्ट प्रैक्टिसेस आई हैव ट्राइड एंड अंडरस्टैंड कि उनके रेवेन्यूज कैसे इंक्रीज हो रहे हैं वो सारी जब आप लर्निंग लेते हैं ना इट हेल्प्स यू टू सिट विद योर क्लाइंट एज अ सोल्यूशन प्रोवाइडर नॉट जस्ट एज एन एजेंसी जब मैंने रियल एस्टेट में बैठ के देखा तो मैंने कंपैरिजन ये किया कि जिस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा था उसका टोटल रेवेन्यू जितना है वो एक प्रोजेक्ट का रेवेन्यू है के साइज का है सो माय करंट प्रोजेक्ट इज बिगर देन द टोटल इंडस्ट्री वॉल्यूम ऑफ माय प्रीवियस इंडस्ट्री सो इस बात ने फिर दैट्स व्हाई यू डिड द शिफ्ट आई ग्रेजुअली स्टार्टेड शिफ्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग आई थिंक इट इज मोर देन मल्टी ट्रिलियंस ऑफ रुपीस की इंडस्ट्री है तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री में इवन इफ यू बिकम अ स्मॉल प्लेयर you become a big player in rest of the industry right so that is how we actually started evolving हमारे पास अभी जो pipeline में projects हैं at a later part of the discussion I'll tell you if we हम उसका पूरा total volume gather करें तो शायद across board पूरी advertising industry TV वो नहीं हो ज़्यादा volume है that's understandable तो after Bahawalpur where is your next plan Lahore so you're coming to Lahore that's so great we have a very interesting project coming here I am inspired by a project called Al Barari so in March I took my team to Middle East are you going vertical or you're again no it's not a vertical project Achha, it's again a proper housing project. Yeah it's a housing project but it's a premium housing project yeah so with new techniques or something because the way you are part I'll tell you the design part I think we're looking at the green architecture. I'm very fond of the horticulture side. While we were developing this glow park, we learned a lot on the horticulture side. What developers are right now missing in their planning is, I'm sure they're fantastic developers, but जो अभी missing link है ना हमारा और Middle East की market का वो ये है कि developers are working only on the plotting, but Middle Eastern market works on the housing, which actually helps the
boost the economy. It actually helps drive a lot of industries with you, and also actual need जो है ना वो housing की है, plotting की नहीं है. You see, हम डेवलपर्स अपने रेवेन्यूज पे फोकस करके ना हम एक्चुअल नीड को भूल जाते हैं. वो 20-20 साल तक उन सोसाइटियों में प्लॉट्स पे कुछ नहीं बनता. सो वी आर फोकसिंग ऑन द हाउसिंग. Finally, but then you will be coming back to housing, and then you will be in Lahore. You'll be doing the project, inshallah. So, now tell us about the 2 pros and 2 cons of real estate industry here in Pakistan. So you see, pros. Pro number 1, you become a billionaire right away. Yes, the revenue is triple than the whole industry. So you become a billionaire right away. Number 1, number 2. Number 2, I think there's so much scope in the industry. अभी तो कुछ Why? नहीं हुआ. जल्दी से 2 बातें. Why you think that there is too much scope? Okay, मुझे लगता है कि जो डेवलप्ड मार्केट्स की प्रैक्टिसेस है ना उसमें और हमारे में अभी 20 साल का गैप. बहुत ज्यादा फर्क. ठीक है, तो ना स्टील स्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, ना अभी आर्किटेक्चर में हम इतने ज्यादा इन्वॉल्व हुए हैं, ना ज़ाहा हदीद टाइप वाले कोई डिजाइन बन रहे हैं. ठीक है, हम सारे के सारे जो स्टैंडर्ड हमें आर्किटेक्ट बता देता है, ना हम आर्किटेक्चर में किसी को चैलेंज कर रहे हैं. सो देयर इज अ लॉट टू ग्रो. तो देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर यंग एंड creative. But people are very interested in taking up a land and selling the land and taking the money in the pocket, and then they are off. The effort. Yes. So there are 2 parts. They are not delivering the quality which they should be delivering. Also, I think there are 2 types of people in the industry. There are people who want to operate as investors, and then there are people who want to operate as developers. सो जो डेवलपर है ना उसका तो हार्डकोर कंस्ट्रक्शन से ताल्लुक है, बट जो इन्वेस्टर है ना उसका ताल्लुक ये है कि हाउ मच एम आई इन्वेस्टिंग, हाउ मच एम आई गेटिंग रिटर्न, हाउ मच रिटर्न आई एम, रिटर्न पे फोकस्ड है. सो हम वी कांट पिक अप दोस पीपल एज रोल मॉडल्स बिकॉज़ वो लोग ड्राइव नहीं करेंगे इंडस्ट्री को. ड्राइव करेंगे ये लोग जो बेसिक क्रिएटिव आइडिया को एग्जीक्यूट करके डिलीवर कर रहे होंगे. एंड अपार्ट बिकॉज़ ऑफ दिस गैप there is a lot of room for those who will be doing something creative or something extraordinary. Absolutely. Hence, I wanted to say that there is a lot of scope for educated people. My dream has been, I'll tell you something really, really interesting. 2015-16, I wanted to develop an organization which goes to the corporates, first 50-100 corporates, sits with all the corporates and wants to develop their real estate wing. This is the actual gap in the industry. Heard of this idea before. Basically, आप मुझे बताएं, आप for example, मतलब कंपनियां आपको दवाई दे देती हैं, all facilities, but they never think of giving the घर to their employees, ना? Also, I think एक vertical है. आपने ये कोट बहुत फेमस सुना होगा कि पूरी दुनिया में जितने भी बिलियनियर्स हैं, they end up in real estate. Yes. Why is it not happening in Pakistan? Why? Because they're not giving the quality product. No. जो जितनी भी क्लीन कंपनीज हैं in the past they never came in real estate because they thought it's not a transparent business. Oh. सबसे बड़ा so this is the biggest con here in Pakistan. The biggest con in Pakistan that we developers have not imparted a sort of character to people or for our generations to get inspired. I love this comment basically. Right, so abhi this is where the gap lies. अब जैसे Manchas has come in real estate. They've developed a solid vertical. ठीक है, उन्होंने apartments launch किए, emporium launch किया. उसी तरीके से there are at least 30-40 बड़े projects, who have not come in real estate. Just because they don't have the expertise, they don't have the teams, and they don't want to get into the dirt. Sorry to say, because for them that's the dirt again. That's the dirt. But on the contrary, because of the previous government or the current scenario, everything is now going vertical. Right? This is where they can jump in. Because so we need to tempt them to come to real estate for themselves and for the nation or for the country too. Yes. They'll do it in a very structured manner. So that was the number 1 con. Yes. The you can say the dirt part that people perceive real estate not a very good industry. Yes. What is the number 2 con of real estate industry? Okay, so there are a lot, but I think our industry needs more of educated people. Yes. That is where the gap lies. Yes. So whenever we think about real estate, it's like so many dealers sitting. When was the last time you heard a course going on in LUMS about real estate? We are planning to launch this year. I'll tell you, this is the biggest gap. Yes. So many people need to be inspired. हम अभी hiring कर रहे थे, हमने कहा यार हम LUMS और LSE के बच्चे hire करते हैं. वो नहीं आएंगे real estate में. आए हैं, ठीक है. But at the end of the day, they don't stay.
हाँ, they don't because stay. you see they need to be consistently motivated. They need to see some icons or idols in front of them. Yes, वो जो बच्चा पेप्सी के डायरेक्टर मार्केटिंग से इंस्पायर होके पेप्सी में जाके बैठता है, वो यहाँ पे बैठ के ज्यादा अच्छा नहीं बैठता। और फिर या फिर उसको पीछे से बैकलैश मिलते हैं, तुम क्या रियल एस्टेट की कंपनी प्लॉट बेचोगे, तुम प्रॉपर्टी बेच रहे हो यार, प्रॉपर्टी में ठेकेदार बन गए हो। So this is what we need to change. Yes. You know, we need to create those role models that bring about that sort of change where these kids who are actually the future of the country, they come and get inspired, work here and develop their own thing. अच्छा, इनकी फैमिलियां भी बहुत अच्छी हैं, इनके पास बैकअप भी है, ठीक है, they can do something massive of their own also. But the only thing is, जो आपने अभी कहा, where are they going to get inspired from? We need to create the personalities here in the sector so that people can come and to whom people can look up to. Yeah, that is where the gap lies. Okay, Kamran, now you tell me, where do you see real estate industry here in Pakistan 5 years down the road? I think 5 years down the road would be a little early. Let's plan 10 years down. 10 years, chalo, okay. 10 years down the road, I think Pakistan would be massively vertical. I personally believe Pakistan would be massively vertical. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट्स आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे, वर्टिकल जाएगा, लैंड कम हो रही है, बहुत कम हो रही है, पॉलिसीज भी बेहतर हो रही हैं। यू सी अभी देयर इज दिस फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट व्हिच हैज बीन प्लान्ड बाय सऊदी गवर्नमेंट, इट्स कॉल्ड द लाइन। देखें दुनिया किधर जा रही है। If you see the ad, you must have seen the ad. Have you seen the ad? The whole city going vertical. Imagine there is no transport, private transport in this. ठीक है, हाई स्पीड ट्रेन्स हैं, AI बेस पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है, ग्रीन लिवेबिलिटी है, that was like a heaven ना। अब आप देखें दुनिया वहां जा रही है। We need smaller size के projects like these by the government. We need people who actually 2 साल पहले तो बहुत massive moment था, अभी थोड़ा सा। But government they were kind to you in the last whole year, and they were very kind in extending. Hence we came in. Hence so many other people came. So many. Now, please, Kamran, do tell me about the trust deficit or the bad things which the real big state guys do. Right. फाइलें बेच देते हैं, yes. लोग सारी उम्र की कमाइयां लगा देते हैं, and at the end of the day they are getting nothing. वो जाते हैं, फिर वो दुआएं मांगते हैं, पता नहीं पत्थर छत्तर मारते हैं। गवर्नमेंट ने इसमें बड़ा जबरदस्त काम किया। ठीक है, yes. 2008 का क्रैश हुआ, millions of rupees, millions of people lost their money and it was in billions of dollars. ठीक है, उन्होंने उसके बाद रूल ये बनाया कि जब आपने काम करना है एक एस्क्रो बनेगा, उस एस्क्रो में जो बिल्डर है उसको उसके कंस्ट्रक्शन की स्पीड के हिसाब से पैसे रिलीज होंगे, ठीक है, दैट्स हाउ द कस्टमर इज गोइंग टू बी सिक्योर्ड। सम सॉर्ट ऑफ पॉलिसी ऑन द लाइंस वुड बी द अल्टीमेट पॉलिसी, अदरवाइज कोई कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है, आप नहीं रोक सकते इसको, नहीं रोक सकते, आप नहीं रोक सकते। और फिर ये फाइल सिस्टम है, मेरा तो मानना ये है कि ये है ही कंज्यूमर को बेचारे को हिट बैक करने के लिए, क्योंकि अगर आपने 120 फाइलें बेची हैं तब आई ऑलवेज नाउ मुझे ऐसा लगता है 20 ने तो इधर उधर होना ही होता है। Actually, is that the real scenario? No, it's not like that. Okay. I think it is even more worse. It is worse. Oh. So हम जब फाइल्स लॉन्च कर रहे होते हैं तो अगर हमारे पास कैपेसिटी होती है 1000 प्लॉट्स की, तो हम कहीं 5000 फाइल्स लॉन्च कर रहे होते हैं। That's the case with the Grand Avenue, with Eden, with so many people who have done this. We won't be naming it. But no, that's known by all the rest of the public too. Grand Avenue का भी आपको पता है कि कितना बड़ा वाकया हुआ था। तो इसका क्या हम कैसे, मतलब being the end user, कैसे वो उनको ये पता चलेगा? End user can't. Authentic project. मैं जब इस इंडस्ट्री में नया आया ना, तो हमारी आपको दुख तकलीफ फील होता है, वो बहुत सेंसिटिव होता है। वो जो क्लर्क मतलब he was doing the committee for 20 years, then पता नहीं किस तरह उसने एक प्लॉट लिया 3 मरले का, and then at the end he got to know that plot was fake. मैं आपको कैसे जस्टिफाई करेंगे? बड़ा सैड एक्सपीरियंस बताता हूँ। I had a friend of mine, he was developing a mall. वो मॉल डेवलप होते हुए 2 साल लेट हो गया। जब वो मॉल लेट हुआ तो मैंने वन डे कॉल ही मैंने ऐसे यार तुम्हारे कस्टमर्स तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं, मतलब आरंट दे कमिंग टू यू एंड दे नॉट क्या कर रहा है, उसके साथ उसको कैसे डील कर रहे हो? तो ही गोज यार 120 कस्टमर्स हैं तो कोई बात नहीं है। मैंने कहा तो बट तुम ये देखो कि व्हाट विल हैपन, बट आप अगली सुने जो एक्चुअली द क्लोजिंग लाइन वाज वेरी इंटरेस्टिंग। या ही सेड, मैंने उसे कहा यार सो व्हाट अबाउट इफ यू लूज योर कस्टमर्स व्हाट विल हैपन? इसे यार इतनी बड़ी रियल एस्टेट इंडस्ट्री 120 कस्टमर्स चले भी जाएंगे तो क्या होगा? दैट इज व्हाट वाज आई ओपनिंग फॉर मी कि यू सी 120 कस्टमर्स आपको मैटर नहीं करते। इसकी रीजन ये है, मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूँ।
इतना ज़्यादा इन्फ्लक्स है कस्टमर्स का, लोगों की इतनी ज़्यादा नीड है रियल एस्टेट कि वो डेवलपर जो इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते, उनके लिए मैटर ही नहीं करता कि उन्होंने पीछे मुड़ के देखना है. ये this cannot be this needs to be treated on national level. Yes. Actually, and this, you see, this needs to be controlled on the regulatory level. This level. Cannot be controlled on public level. No, that can't इसमें तो regulator का रोल है. अब मैं DHAs के साथ काम कर रहा हूँ. हमने in principle ये decide किया है, we would not work with outside DHA for the next 5 years. This is our principal decision. DHA के साथ काम करते हुए हमारा रेगुलेटर इतना सख्त है, मैं आपको because that DHA, वो मैं आपको अपने एग्रीमेंट का टाइम बताऊं. Here comes the army. Yes, I spent 8 evenings with my lawyers sitting in front of their whole board, and the negotiation was, उन्होंने हमसे इतनी हार्श बातें की मैं आपको बता नहीं सकता. But that's a good thing. Although I'm an ex-army officer, we want this for the rest of the people too. You know what they asked me? Yes. Dr. Saab, for example, in the middle of the project, you leave the project. So who's going to complete the project? Okay. If you're not there, give up your backup. Give us your backup. All these conversations. उन्होंने मेरा a sort of escrow develop किया. They actually retained a certain amount of money that comes to us in a joint account, which is not going to be used anywhere by you or by them. Just for the rainy days. ठीक है. So that's why DHA is DHA, yes. Man. So अगर आप लाहौर DHA के साथ काम करेंगे, लाहौर DHA के पास एज ए डेवलपर आप जाएं, तो वो आपको कहते हैं कि आपने अगर काम करना है तो आप क्या करेंगे, एक हमारा जॉइंट अकाउंट होगा, और उसके अलावा you need to have enough money on you to come from the basement. उसके बाद हम आपको पब्लिक मनी रेज करने देंगे. सो DHAs ने अपने आप को इस हिसाब से बहुत स्ट्रक्चर किया हुआ है फॉर प्राइवेट प्रोजेक्ट्स. आप देखेंगे बहुत ज़्यादा प्राइवेट प्रोजेक्ट्स नहीं आते DHAs के अंदर. उसकी रीज़न ये है कि उनके स्क्रूटनी प्रोसेस से हर कोई नहीं गुजर सकता. हमने ये प्लान किया, बट उसके बाद वंस यू गो थ्रू दैट प्रोसेस, एक दफ़ा हम गुजर गए हैं, तो आपके ऊपर पब्लिक का ट्रस्ट बहुत वो ट्रस्ट डेफिसिट अगर आपने कवर कर लिया, देन यू विल बी समवन टू हुम पीपल विल बी लुकिंग अप टू. यस. अभी मेरा जो डॉक्यूमेंट है ना ट्रांसफर का, वो DHA से इशू होता है. ओके. So, जब मैं किसी को बताता हूँ ना कि यार आपका ट्रांसफर DHA में हो रहा है, वो दूसरी बात नहीं करते. तो दिस इज व्हाट वी एक्चुअली एस्टैब्लिश्ड कि आप एक दफा टफ टाइम गुजार लें, ट्रांसपेरेंसी लें अपने प्रोसेस में, अपने रेगुलेटर को भी ट्रांसपेरेंसी शो करें. अच्छा, एक ये स्टेप है. दूसरा स्टेप ये हुआ है कि उनका एक डिपार्टमेंट है, इट्स कॉल्ड P&D डिपार्टमेंट. P&D इज प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट. वी हैव अ फोर्टनाइटली मीटिंग विद P&D डिपार्टमेंट ऑन आवर डेवलपमेंट प्रोग्रेस. 15 दिन की एक मीटिंग में अगर हमारा जो गिवन स्केड्यूल है उससे हम लैग कर जाएं, तो द रिपोर्ट गोज टू द प्रोजेक्ट डायरेक्टर, देन इट गोज टू द कोर कमांडर. सो ये बड़ी उन्होंने इस मामले में चेक्स अपने ठीक रखे हुए जी. तो अब आप बाहर चले जाएं, मैं अभी इसी बाउंड्री से बाहर चला जाऊं. मैंने फॉर एग्जांपल LDA से एक चीज का अप्रूवल लिया है. जैसे मैंने LDA से अप्रूवल ले लिया, अब LDA डज नॉट रेगुलेट मी. They can't. They don't have the power. बस बात खत्म. अब आप जाए और आपका उसमें कितने प्लॉट निकले उन्हें नहीं पता. उन्होंने तो वो एरिया अप्रूव कर दिया ना. थोड़ा सा रेगुलेट करने की जरूरत है इन इदारों को. Kamran, now we are done with the industry, we are done with your company, we are done what you are doing. Now come to you. Sure. So why you became doctor when you were supposed to end up here? मैं जी I was the. या आपकी अम्मा अब्बा की ख्वाहिश तो नहीं थी? देखा सी. मैं जी बलि का बकरा था. Do you remember those days? जो आपने अपना was the ultimate. So my childhood, I am the only doctor from my family. Sure. And you should practice too. I actually practiced. I practiced for 7 years. Acha. Yeah. So I was okay. So there is so much on your plate, by the way. So basically, what happened? I actually graduated, and after that, I served in the army for 7 years. And as a doctor. As a doctor. And in that time, I got posted to. My last posting was CMH Lahore. ठीक है. So उसके बाद फिर I was never a clinician. I think the other day I was talking to a friend of mine. उसने मुझे कहा कि अगर तुम्हारे में से ही entrepreneurship निकाल लें तो शायद तुम्हें कुछ भी नहीं होगा. So you see, that's by the way very obvious in you. Yeah, so हम entrepreneurs का ये challenge है कि हम इतने driven होते हैं कि हमें बाकी चीजें छोड़ देते हैं, बाकी चीजें नजर नहीं आती. That's with everyone. That's why we always, मतलब हम CEO Club always ask this question that how do entrepreneurs do balance their work and life? आपको पता नहीं हो पाती because they are always like नहीं जी काम जिंदगी है. No, we are dedicated to work. मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ it's like giving birth to a child. हाँ. ये आप वो मूड खराब क्यों हो रहा है जी, आज काम ठीक नहीं हो रहा, मूड बहुत अच्छा क्यों, आज काम बहुत अच्छा हो गया. So everything revolves around that. हाँ. So you were doctor, you served army, then you came to Lahore. Yeah. और फिर आप इधर आए. I was in Lahore.
I got my education from here. मैं यहाँ पढ़ा, फिर उसके बाद मैं आर्मी में चला गया. फिर मैं वापस आया तो it's a very interesting part. So आखिरी 2 साल मेरे फौज के जो थे तो I started struggling with looking around. मैंने कुछ और करना है. This is not me. This is a friend of mine and myself. We used to hang out. हमने पहले construction materials के साथ start किया. अच्छा. या और उसमें हमने बहुत ज़्यादा पैसे भी कमाए. फिर खैर वो एक हमें आदमी मिल गया, उसने हमारे पैसे लेके भाग गया. चलो. अच्छा, this is by the way with every real estate newcomer, na? Yeah, this is actually a textbook course. Done. That you're done with that. चलो मुबारक हो. उसके बाद I had friends in a very good company, National Advertising. We used to sit in the evening. हम सारे इकट्ठे बैठते थे शाम को. तो they told me कि यार this is the opportunity, this is the gap that you need to identify and go there. वो मैंने explore करना शुरू किया. From there we got into the advertising. I stayed in that industry for 3-4 years with deep focus. You did the MBBS, then you were a doctor 7 years, then you were into advertising, and then you came. So this makes you up like for more than 40, 50. You don't look like that. You don't look that old, na? Thank you. So, no, but I think. Or you covered this whole thing in 1 decade, I guess. 8-10 साल में आपने ये सब experience करके, and then you landed. Yeah. So basically that is the journey. But उसमें उस दौरान क्या हुआ कि मैंने आपको कहा कि I have focused on one thing all my life. जो भी करना है उसकी डेप्थ में जाना है. अब ये मेरा this is my first project. मैं 3 दिन पहले जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसके हेड के साथ बैठा बात कर रहा था. तो मैं उसको ना बड़े डीपर प्रॉब्लम अपने इंजीनियरिंग के बता रहा था कि मेरे यहाँ बैचिंग प्लांट का ये इशू चल रहा है, उसका ये चल रहा है. तो आपको कैसे पता? बिकॉज तुम आधे इंजीनियर तो तुम बन गए हो. तो बेसिकली मैंने देखा है good entrepreneurs, they actually are very insightful. Yes, they are. They always go deeper into their categories and they focus on the deeper problems of their organizations. So abhi bhi main jo, and honestly we are a new organization, we are learning, we are developing our processes, but we are trying कि हम अपने processes ऐसे बनाएं जो किसी भी और बेहतर कैटेगरी के कॉर्पोरेट के साथ कंपैरेबल हो. And if your pilot is a good one, then imagine what you will be doing later on, na? Inshallah. I think it is for my team to Inshallah. Now short questions. How do you handle stress, Kamran? I sleep. Oh. Yeah. Wow. A lot of stress. I disconnect from the situation and I go to sleep. You sleep. I sleep. जब नींद आ जाती है? नहीं, हाँ, मैं जब बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होता हूँ तो मैं उस एनवायरनमेंट से डिस्कनेक्ट करता हूँ. That's environment and then I go to my own time. मैं थोड़ा अपना टाइम लेता हूँ, डिस्कनेक्ट करता हूँ, कंटेम्पलेट करता हूँ, फिर वापस आता हूँ. Work life balance? No work life balance. Only work on the top. I only have work in my life. और मुझे कुछ अभी फिलहाल excite नहीं करता. 2 hobbies of Kamran? I play squash. I go to the gym. I'm very regular in that. ये दोनों चीजें. A person you look up to, your ideal? So there's this company called Ellington Properties in Middle East. The owner is called Robert. He was one of the senior director in Amar. I really like his work. I think if we're able to achieve what they have achieved in the last 10 years, that is the sort of learning that we want to develop. Inshallah. Do you read books? I read a lot. Really? Of books. So recommend us 2 books. There's this book I love, Tony Robbins' Ki Money. Okay. And then there's another book, it's called Power. Yeah. Okay. It's, I think white title, I guess. है ना? Red color book, red cover book. Okay. Power of Now is the white one. Okay. So ये जो 2 books हैं ना, they've actually transformed my perspective about growth. 2 things you want to change in your personality? Patience. चाहते ज़्यादा है. Yes. Okay. Number 2. और I think I want to have work-life balance also. Oh, that's the ultimate thing too as well. These 2 things. Okay, what do you think about success, Kamran? I think it's a journey. I think there's nothing called conclusion of success. It's an ongoing journey. Once you're done, then you did. Every day you plan success with a different definition. True. You know what success was for me 5 years ago, it is different for me now, and it is going to be different for me tomorrow. But I think for me now, I have become very close to Allah. And yeah, Alhamdulillah, by the grace of Allah. And this happened now, पहले नहीं था. You see, I was always with very, age very you. But मैं अभी recently मेरे में जो change आया वो ये हुआ है कि मैंने बहुत सारी चीजें
मैंने फेथ पे डाली हैं और उससे मुझे बहुत हेल्प मिली है. This is not your age of saying all this, but I'm glad that you are saying all. No, honestly, this is actually transformed a lot of things for me. मेरे लिए हम अपनी तरफ से बहुत सारी चीजें में खुद स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बट होता क्या है कि आपको ये पता नहीं होता कि इट्स नॉट इन योर कंट्रोल. Yes. तो मैं ना जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था तो आई वेंट थ्रू लॉट ऑफ स्ट्रेस बिकॉज बहुत ज़्यादा फियर ऑफ अननोन था, बहुत ज़्यादा चीज़ें नई थी, प्रेशर बहुत ज़्यादा था. और जो मुझे पूरी 10 साल की मेरी लर्निंग रही है कि जहाँ पे भी आप नया काम स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट यू फेस इज़ नॉट द रिजल्ट, द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट यू फेस इज़ द एक्सेप्टेंस. लोग आपको कह रहे थे यंग सा लड़का इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पाकिस्तान का. कहता यार इसने हमें क्या सिखाएगा, हम बताते हैं. मैं आपको अपनी लर्निंग भी बताता हूँ. मेरे साथ ये हुआ कि there was a point when I got so frustrated that I went to a friend of mine. He said यार मिडिल ईस्ट चले जाओ. I said why? उसने कहा तुम्हारी तरह के लड़के ना वहाँ बिलियनियर्स हैं सारे. सही कहा उसने. And you will come across, हर रोज तुम्हें शाम को एक सक्सेसफुल लड़का मिलेगा और तुम कहोगे यार इससे आगे जाना है मैंने. बट यहाँ तुम्हें अपनी तरह के लड़के नहीं. यहाँ पे लोग खींचेंगे आप. यहाँ पे छोड़ दे, बर्बाद हो जाएगा. My friends, yes. दोस्त मुझे कहते तू पागल है, तेरी कोई लाइफ है, मतलब nobody would motivate you. बट इसी वजह से मेरी दोस्तियाँ सारी मेरी ओल्डर एज के लोगों से. Because they keep on pushing you, ना. हाँ, they've been there, done there. आपको पता है बैठे होते हो आग लग जाती है, चीजें बर्बाद हो जाती हैं, फ्लड आ गया है. So मतलब one must have this resistance ना. तो फिर क्या चीज थी जिसने आपको दोबारा ग्रो अप कराया? वो पैशन था, क्या था? I think मैं honestly आपको बताऊं, I have not been able to identify that. मैं नहीं आइडेंटिफाई कर सका, but there is something that drives. Might be that there is some inborn personality trait. I'll tell you, मैंने ये बड़ा पढ़ने की भी कोशिश की है कि ये लोगों को ड्राइव क्या कर रहा होता है. But I think it actually has something to do with their childhood. Yes. Something to do with their their family structure. And now you're having a lethal combination of this and then your faith thing, ना. तो अब this is really a very lethal combination. I'll tell you, मुझे लगता है कि जो आपको मैंने कहा है ना कि पेशेंस वाला पार्ट, वो आपको सिर्फ फेथ से मिलता है. वो फेथ से मिलता है. वो मैं आपको बात बता रहा था कि जब बहुत ज्यादा प्रेशर हो ना, then I went for उम्रा. मैं उम्रे पे गया और मैंने ये रियलाइज किया कि देखें दुनिया में अल्लाह ताला इतने लोगों को, हम तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इतने लोगों को इतनी सारी चीजें दे रहे हैं और उनको साथ डेप्थ भी दे रहे हैं. देन आई आस्क्ड फॉर डेप्थ. मैंने अल्लाह से डेप्थ मांगी कि जहां पे भी हैं, जितना भी रहे, उसमें सुकून दे, हमें कंटेंटमेंट दे. दैट इज द मोस्ट. व्हाट इज हैप्पीनेस टू कामरान नाउ? This will be the answer for the whole discussion. So happiness for Kamran would be loving what he's doing and enjoying everything every day. That is your happiness for me. So अब मैंने वो कर लेंगे तो ये हो जाएगा और वो कर लेंगे तो ये हो जाएगा, छोड़ दिया. I want to enjoy every day by its time. Kamran, there are lots of guys, लड़के, हमारी यूथ है जो कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, जो ये समझती है मेहनत से कुछ नहीं मिलता. What is your message of hope and optimism for them? You will be answering by looking in the camera. So I personally believe कि जो ये अभी हमने बात की है कि इससे मेहनत से कुछ नहीं मिलता, मुझे लगता है इसके अलावा कुछ नहीं मिलता. आपका सिर्फ एक काम है, आप रिजल्ट्स की फिक्र छोड़ दें और आप सिर्फ मेहनत करें. आई एम टेलिंग यू, इन द मिडल ऑफ द जर्नी यू विल एक्चुअली फील सो अलोन और आप सोचेंगे यार ये नहीं होना, बट कीप ऑन डूइंग इट. एंड आई कमिट टू यू दैट जिस दिन आपने सबसे कम होप किया होगा उसी दिन होगा. Thank you, Kamran. Thank you so much. It was such a good time to have you on this seat. And I learned a lot from you, by the way. Might be there are so many huge players in your industry as well. But कुछ चीजें आप में वाकई हैं. Then I really wish you good luck. Number one is your dedication. Even when you were a doctor, even when you were studying doctorship, or when you were doing the advertising agency, you had this in your blood. The entrepreneurship. आपकी dedication is outstanding. Number two, which really I have seen in you, is your perfection, that you're always looking forward for perfection, ना, और going into depth. मेरे ख्याल में अगर आप ये दोनों चीजें इकट्ठे डेडिकेशन के साथ ये चीज डिलीवर कर पाए ना, तो might be your first project or coming up projects, they are small, but if they are delivered with the quality, so there is a huge room for you. So best of luck. Thank you. और मैं जरूर जाऊंगी आपका project देखने. And I wish good luck to Takmeel Square. Thank you so much. Thank you so much.